Welcome viewers. Today we will discuss Elegy. Elegy, if we call in Hindi, Shok Gate. So Elegy is a reflective poem that laments the death of a public personage, a friend, or a loved one. So basically, Elegy mourns the death of a person, rather a loved one that we love so much. So Elegy is a meditative poem on the theme of human mortality. That we humans are, if we call it Nashwar. The Nashwarata of human beings is discussed, is the prime theme of Elegy. In Elegy, the poet laments the death of a public personage or a friend or a loved one, as we defined earlier. So Elegy is written in an elegiac meter. Elegiac meter is an alternating hexameter and pentameter. Alternating lines of hexameter and pentameter. Traditionally, Elegy was written in alternative hexameter and pentameter lines. So Elegy covered a wide range of subjects, from laments to love poems. Elegy not only laments the loss of laments the death of someone loved, but Elegy also laments the loss of love. So its subject matter is very wide. So in modern uses, so Elegy refers to a poem that contains matter. In modern uses, Elegy in Elegy contents matter, not the meter. ओनली कंटेंट्स मैटर, नॉट द मीटर. केवल मॉडर्न टाइम में केवल कंटेंट मैटर करता है. मीटर आज के टाइम में जो है पोएट्स को यूज़ नहीं करते. सिर्फ कंटेंट उसका जो है, विषय वस्तु जो है, सब्जेक्ट मैटर जो है एलेजी का, वो शोक गीत वाला होता है. सो इट इज़ अ पोएम ऑफ लैमेंटेशन एंड कैन बी रिटन इन एनी मीटर. सो इट्स अ पोएम ऑफ लैमेंटेशन, और ये बेसिकली पोएम ऑफ लैमेंटेशन, बेसिकली पोएम ऑफ मॉर्निंग. ये शोक व्यक्त करते हैं जब हम किसी की डेथ पे या किसी की लॉस पे, वो है. और किसी भी मीटर में जो मॉडर्न टाइम्स में हम इसको लिख सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी टू बी रिटन इन अल्टरनेटिंग हेक्सामीटर और पेंटामीटर लाइन. So there is a common kind of pastoral, common kind of elegy that we discuss in this topic. That is the pastoral elegy. That is pastoral elegy. Pastoral is a word that suggests the rural surroundings, natural surroundings. पेस्टोरल एक ऐसा वर्ड है जो कि एक नेचुरल हैबिटेट को, रूरल कंट्री साइड हैबिटेट को डिस्प्ले करता है, जहाँ पे जो एक आइडलाइज्ड सेटिंग्स होती हैं, नेचर है, पेड़ पौधे हैं, झरने हैं, नदी नाले हैं. दैट इज़ द पेस्टोरल. सो पेस्टोरल एलेजी फॉलोज द फॉर्मल पैटर्न, दैट इज द कन्वेंशनल पैटर्न. in pastoral elegy there is a shepherd. एक शेपर्ड होता है. पेस्टोरल एलेजी एक गडरिया होता है दैट लेमेंट्स द डेथ ऑफ द फेलो शेपर्ड, जो कि फेलो शेपर्ड की डेथ को लेमेंट करता है, दैट उसका जो फेलो को शेपर्ड है उसकी डेथ हो जाती है इन एन आइडलाइज्ड सेटिंग. आइडलाइज्ड सेटिंग्स में सारी नेचर्स है, सारे नदी नाले झरने हैं, वो सारा उसको बड़ा शौक में सारी जो नेचर है वो इस तरीके से लगती है. सो in pastoral settings it includes the funeral procession. Funeral procession किस तरीके से जाता है, descriptions of mourning throughout natures, and the musings of inevitability of death and decay, and the musings, and ultimately जो shepherd है, mourning shepherd है, वो उस पर थिंक ओवर करता है. दैट इज इनएविटेबल, डेथ इज इनएविटेबल, डिके इज इनएविटेबल.
भी नाश है, नस्वर है, जो डेथ है वो तो होने वाली है, इनएविटेबल है, उसको नोबडी कैन स्टॉप, उसको कोई स्टॉप नहीं कर सकता, कोई इसको टाल नहीं सकता है, डेविएट नहीं कर सकता इन चीज़ों को. सो अल्टीमेटली pastoral elegy ends with the affirmative justification to the nature's laws, that is the laws of nature, that uh, if birth, if one thing born, that it is compulsory that that thing also dies, कि ये ज़रूरी है कि जो चीज़ पैदा हुई है उसको मरना भी है, जो चीज़ पैदा होती है उसको एक न एक दिन जाना होता है. तो इट जस्टिफाइज द नेचुरल नेचर्स लॉज, नेचर्स के लॉज को जस्टिफाई करके एंड होती है, दैट इज़ द पेस्टोरल एलेजी. बड़ा वेरी फॉर्मल पैटर्न है, बड़ी सिंपल है. फेलो सेपर्ड होता है, एक गडरिया होता है, उसके फेलो सेपर्ड जो साथ का काम करने वाला गडरिया होता है, उसकी डेथ हो जाती है, लेमेंट्स करता है उसकी. और किस तरीके से लेमेंट्स करता है, वो फर्स्ट इन्वॉक द म्यूज़, द गुडिस ऑफ म्यूज़, वो गुडिस ऑफ म्यूज़ को इन्वॉक करता है और अपने फेलो जो सेपर्ड की डेथ पे उस पर बड़ा शोक व्यक्त करता है. तो इस तरीके से इसमें होता है. देर आर एग्जाम्पल्स ऑफ pastoral elegy, that is Lycidas, published in 1638 by John Milton, Adonais by P.B. Shelley, and Thyrsis 1867 by Matthew Arnold are the examples of the pastoral elegy. But there are other kinds of elegies that not follow any conventions, any rules. कुछ एलेजी ऐसी भी हैं जो किसी कन्वेंशंस को और किसी रूल्स को वो फॉलो नहीं करती हैं. वो किसी भी रूल्स में किसी भी कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे एलेजीज में एक सेपर्ड ही हो, फेलो सेपर्ड उस पर उसकी डेथ पे मॉर्निंग लेमेंटेशन करे. बट देर आर अदर एलेजीज. एन इम्पोर्टेंट स्कूल ऑफ an important school was developed in the 18th century that wrote only elegies. A school here stands for the group of poets that is commonly known for the graveyard school of poets that was developed into the 18th century, and there are some poets who wrote elegiac poems, जो कुछ elegiac poems वो लिखते हैं. And these the poems of these poets reflecting death and immortality. और ये जो इन poets की जो पोएम्स हैं, एलेजीज हैं, वो डेथ एंड इमोर्टलिटी को एक्सप्रेस करती हैं. इस तरीके की उन्होंने जो एलेजी हैं वो लिखी हैं. एन इम्पोर्टेंट एलेजी, द मोस्ट नोटेबल एग्जाम्पल्स, द मोस्ट प्राइम एग्जाम्पल ऑफ एलेजी इज एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड बाई टॉमस ग्रे, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, published in 1751. That is the notable example of the elegy written in a country churchyard. This elegy pays tribute to generations of humble and unknown villagers villagers who buried in churchyard. ये उन लोगों को ट्रिब्यूट पे करती है जो चर्चयार्ड में जिनको दफनाया जा चुका है, कब्रों में जो जा चुके हैं. बहुत बड़े बड़े लोग भी थे, बहुत छोटे छोटे लोग भी थे. द अल्टीमेट जो प्लेस होता है, वो अल्टीमेट जो प्लेस होता है वो चर्चयार्ड होता है. सो एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलेजी, very important example. So elegy, but modern times also there are elegies written by authors, by various poets, and a modern poetry is not untouched with elegy. There are other examples of elegies are A. Houseman's is a modern poetry to an athlete dying young, and W.H. Audens in memory of W. Yeats are the modern examples of elegy. So we see that elegy is basically a poem of lamentation. एक poem of lamentation है, शोक है, व्यक्त है, mourning की है, mourning, 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 शोक व्यक्त करना at the death of some loved one, किसी प्यारे
दोस्त हो, चाहे कोई पब्लिक पर्सोनिज हो, चाहे कोई अपना फ्रेंड हो, उस पर एक ये जो है पोएम होती है. सो एलिजी इज़ अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन, बट इट्स सब्जेक्ट मैटर इज वाइड. इसका जो सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट रेंज जो है बड़ा वाइज है. इट्स कवर्स नॉट ओनली डेथ बट वेरियस काइंड ऑफ लॉसेज दैट वी फेस इन आवर डेली लाइफ. बल्कि जो वेरियस काइंड ऑफ लॉसेज है जो हमारे डेली लाइफ में हम फेस करते हैं, उनको भी इंक्लूड करती है जो एलिजी है. सो आई होप you enjoyed the lecture on Elegy. Thank you friends.